if vectors A cos omega t I cap plus sin omega t j cap and vector B cos omega t by 2 I cap plus sin omega t by 2 j cap are functions of time, then the value of t at which they are orthogonal to each other. ऑर्थोगोनल होंगे तो ए बी की डॉट प्रोडक्ट मस्ट बी ज़ीरो. वेक्टर ए इज कोस ओमेगा टी आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी जे कैप एंड बी वेक्टर इज कोस ओमेगा टी by 2 y cap plus sin omega t by 2 j cap. A dot B will be cos omega t into cos omega t by 2 plus sin omega t into sin omega t by 2. फॉर्मूला होता है cos A cos B प्लस sin A sin B is equal to sin cos A minus B. Cos A minus B. So A dot B will be cos omega t minus omega t by 2 and this must be equal to 0, or cos omega t by 2 is 0 or cos pi by 2 is 0. So omega t by 2 is equal to pi by 2 or t is equal to pi by omega. t की वैल्यू होगी that is pi by omega. C is correct option. Next, two vectors A and B move with constant velocities v1 and v2 at the initial moment. Their position vectors are r1 and r2 respectively. The condition for particles A and B for their collision is position vector, initial position vector, suppose A का position vector is this r1 and B का position vector is this r2. OA is r1 and OB is r2. The velocity of A is v1 and velocity of B is v2. Suppose t time बाद they collide. For collision they will be on same point. Suppose this point is C. After t time बाद same point पर होंगे. AC will be V1T and BC will be V2T.
C की पोजीशन वेक्टर is OC and suppose this is R vector. R vector in case of particle A will be R1 plus V1 vector into T, and in case of particle B, R will be R2 vector plus Vt vector into T. Equation number 1, equation number 2. From equation 1 and 2, R1 vector plus V1 vector into T is equal to R2 vector plus V2 vector into T. Or V2 vector into T minus V1 vector into T is equal to R1 minus R2 vector. Or T V2 minus V1 is equal to R1 minus R2. Equation number 3. 3 से T की वैल्यू विल बी R1 minus R2 and V2 minus V1. T is scalar quantity, hence मैग्नीट्यूड होगा R1 माइनस R2, इसको डिवाइड कर देंगे मैग्नीट्यूड ऑफ V1 माइनस V2, so that will give value of T. Put this value in equation 3. R1 vector minus R2 vector का मैग्नीट्यूड अपॉन V2 माइनस V1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू V2 वेक्टर माइनस V1 वेक्टर इज इक्वल टू R1 माइनस R2. और V2 वेक्टर माइनस V1 वेक्टर अपॉन V2 माइनस V1 का मैग्नीट्यूड will be equal to R1 vector minus R2 vector upon R1 minus R2 का magnitude. This A is correct option. Next, the position vector of particle R as a function of time is given by R is 4 sin 2 pi t I cap plus 4 cos 2 pi t j cap, where R is in meter, t in second, and I and j denote unit vectors along x and y directions respectively. Which of the following statement is wrong for the motion of the particle? R दिए हैं, R vector is equal to 4 sin 2 pi t, 4 sin 2 pi t I cap plus 4 cos 2 pi t j cap. V वेक्टर होगा डिफरेंशिएशन ऑफ R with respect to t, 4 cos 2 pi t into 2 pi I cap plus 4 minus sin 2 pi t into 2 pi j cap, और 8 pi cos 2 pi t minus 8 pi, this is I cap, 8 pi sin 2 pi t j cap. V
एक्सेलरेशन होगा, इसका अगेन डिफ्रेंशिएशन कर दें, dv/dt, and this will be 8 pi minus sine 2 pi t into 2 pi I cap minus 8 pi cos 2 pi t into 2 pi j cap, और माइनस 16 pi square sin 2 pi t I cap और प्लस cos 2 pi t j cap, और 4 pi square माइनस 4 sin 2 pi t I cap plus 4 cos 2 pi t j cap, और 4 pi स्क्वायर माइनस r। तो a की डायरेक्शन a इज एक्सेलरेशन इज अलोंग माइनस r, this is correct. Magnitude of acceleration vector is v square by r. Magnitude of a will be, अगर यहाँ से देखें तो -16 पाई स्क्वायर साइन 2 पाई टी का स्क्वायर प्लस -16 पाई स्क्वायर कोस 2 पाई टी का स्क्वायर, इसका अंडर 16 पाई स्क्वायर का स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 पाई टी प्लस कोस स्क्वायर 2 पाई टी, इसका होल का अंडर रूट, दिस इज 16 पाई स्क्वायर। v होगा v फ्रॉम हियर, v का मैग्नीट्यूड ऑफ v विल बी 8 पाई कोस 2 पाई टी का होल स्क्वायर प्लस 8 पाई साइन 2 पाई टी माइनस का होल स्क्वायर, इसका अंडर रूट, 8 पाई का स्क्वायर कोस 2 पाई टी का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 2 पाई टी, इसका अंडर रूट, this comes 8 pi, this is 1 8 pi, or magnitude of r will be 4 sin 2 pi t का होल स्क्वायर प्लस 4 cos 2 pi t का होल स्क्वायर अंडर रूट, this comes 4. तो a is 16 pi square, v is equal to 8 pi and r is equal to 4. तो v square by r will be 8 pi का square by 4, 16 pi square, that is equal to a. This second is also correct.
मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 8 मीटर पर सेकेंड। मैग्नीट्यूड है इसका 8 पाई, एंड दिस इज नॉट करेक्ट। पाथ ऑफ particle is a circle of radius 4. Path r is equal to 8 sin 2 pi 8 sin 2 pi t I cap plus 8 cos 2 pi t j cap। x कोऑर्डिनेट है 8 sin 2 pi t एंड y कोऑर्डिनेट है दिस इज 4। जो r की r है 2 sin 2 pi t, y is 4 and y is 4 cos 2 pi t। To eliminate t, square both side and add 16 sin square 2 pi t plus 16 cos square 2 pi t, 16 common, sin square 2 pi t plus cos square 2 pi t. This becomes 116 x square plus y square। इसको कंपेरिजन करें स्टैंडर्ड इक्वेशन r square, r is the radius, r will be 16 का root 4। This equation is of a circle whose radius is 4, hence this is also correct। तो जो wrong है, wrong option is option C।